which is compatible with Article 2 of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. These persons who have luckily returned, and at least optically none the worse for wear, like Sheikh Rashid, Farooq Habib, Sadaqat Ali Abbasi, Usman Dar, Azam Khan and others, would ideally be the best source of information about their captors, but the petitioner understands that they or their dear ones may be put to immediate jeopardy. They may therefore... Are you saying that these people are... They were abducted, kidnapped, after some time. I'm sorry. Are they petitioners before us? No, my lord. It is public interest litigation before you. No, Dekina, you are specifying certain individuals. Either you should say these individuals are very poor, people without any resources who cannot approach the courts. Or you have certain other priorities, I don't know. How can we compel a person who can file a review petition in the Dharna case and not file other cases and file every other case? How can you plead on behalf of another person unless that person is a underprivileged person? That's a different thing. But if you are saying, is Mr. Sheikh Rashid one of the underprivileged persons who does not have a voice, who does not have access to the media, who cannot engage a counsel, who cannot approach the court, is he one of those persons? No, my lord. Yes, you are coming 184.3. My lord. Yes, my lord. Take a second. दूसरी बात, Mr. Sheikh Rashid, may tomorrow say, I have no grievance. Who is Mr. Shoaib Shaheen to take my name in court? Have you made him a party? No, my lord. How can you take him? There are certain basic principles of drafting. If you're going to plead someone else's case, either you array him as a petitioner or array him as a respondent. You cannot just use a person's name. And are all these persons aligned to certain political party, then it becomes a political matter that you're bringing to the court. Either you come with a genuine request for missing persons. If you're going to make it politicized, this is not the forum for that. And these are persons who wax eloquent on television every day. So please, they are not underprivileged people who cannot... Has Mr. Sheikh Rashid ever been a minister? Right. How many times? 7-8 martaba, I think. So ये मासूम लोगों में इनको आप कैटेगराइज करेंगे? आप जरा सोचिए ना, देखिए ना, अगर if you're genuinely interested, then please tell us. We will certainly assist. It's very wrong. But if Mr. Sheikh Rashid cannot come to the Supreme Court, then I don't think anybody can come to the Supreme Court. After all, Itazaz Ehsan has come to the Supreme Court. So can he come to the Supreme Court himself? You cannot plead someone else's case. But I have not only the names. Who's Mr. Farooq Habib, then the next name? He was a political activist. He belonged at that time to the PTI, but thereafter he left. And he was placed before the TV house. Before that, his cases... Before the house? Some TV station that I was kept somewhere. I went somewhere, and thereafter पीछे family ने सारे मुकदमात कर रखे थे कि he was arrested, he is kidnapped, he don't know the whereabouts, and thereafter he reappeared on the TV show that he said that I was missing on my own motion. मतलब मैं जो गुजारिश करता हूँ मैं one by one चलते हैं. So then he's also a political activist. Chale. Who's Mr. Sadaqat Ali Abbasi? He was also a political activist. In which party? To the PTI. They then अब now change. ये इनमें से कोई कोर्ट खुद कोई नहीं आया है. सर कोर्ट में इनकी अब change क्या मतलब किस पार्टी में अब? Left the PTI, I think शायद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या किसी और पार्टी में या but TV हाउस में पेश किया गया. आपकी ये रंजिश है कि ये आपकी पार्टी छोड़ गए? No my lord. हम ये कहते हैं. नहीं, एक सेकंड ठहरिए ना. तो आप इनके लिए प्लीड कैसे कर रहे हैं? अच्छा, अगला नाम पढ़िए. ये कौन है? उस्मान दार साहब. उस्मान दार भी, my lord, he was also a political activist belonging to PTI. PTI Then क्या आप किस पार्टी में? At that time, no, left PTI, but not
तो हम क्या उनको कहेंगे वापस पीटीआई में शामिल हो जाओ? नो रीजन माय लॉर्ड, हम ये नहीं कहते। हमारी जो गुजारिश है सीनियर काउंसिल सर, मैं अर्ज करूंगा ना सर। अच्छा, अगला नाम ही कर लें। आजम खान कौन है? आजम खान, ही वाज ए ब्यूरोक्रेट, ही वाज एबडक्टेड। Was bureaucrat का क्या मतलब? He was PSPM, Principal Secretary to Prime Minister. What grade? 22 grade. Do you go higher than 22? Sir, Can you go higher than grade 22? No sir, that is the last. So he can't plead his own case. सर वजह थी, मैं आप प्लीज देखिए ना, अगर आप इसको पॉलिटिकल लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हम आपको इजाजत नहीं देंगे। नहीं सर, अगर नहीं, आप बिल्कुल अभी तक जो आपने बातें की हैं सारी आपने एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी की बातें की हैं, ठीक है। अब सर इसमें जो है ना सर, मैंने तमाम लोगों को ब्यूरोक्रेट्स, माय लॉर्ड पॉइंट्स आउट कि आपने और भी नाम लिए, ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम है, मिसिंग पर्संस, बलोच फैमिली। मोहम्मद खान भट्टी जी, ये कौन है? ये पंजाब का ब्यूरोक्रेट था सर। तो आपको इनसे क्या ताल्लुक है सर? हम ये लोग मिसिंग हैं अभी नहीं, अब पेश कर दिए गए, तो फिर आपकी पिटीशन खत्म हो गई। नहीं सर, टू दैट एक्सटेंट मैंने ये कहा है कि किन हालात में इनको उठाया गया, किन हालात में अपियर कराया गया। एक सेकंड ठहरिए ना, स्टेट एजेंसी या तो आप एतजाज एहसन साहब के सामने उठाया गया हो तो वो कह सकते हैं हाँ मुझे पता है, या जो उठाया गया शख्स वो खुदा के कहे कि मुझे मेरे साथ ये जुल्म हुआ, मेरे साथ ये ज्यादती हुई, तो हम उसको सुन लेंगे। बिल्कुल ठीक। आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं ये बताते हैं सिर्फ। सर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर लोगों पे प्रेशर है, स्टेट एजेंसीज का प्रेशर है, और वो इस काबिल नहीं है कि वो अपने आप को, ये लोग जिनके कैन बी विटनेसेस। शोएब साहब, ये जो आपने जिन लोगों के नाम लिए ये तो असर रसूख वाले लोग हैं ना सर। जुल्म तो किसी पे भी हो सकता है, असर रसूख वाले पे अगर जुल्म हो, अगर वो ना उठ सके तो जनाब ने ही उनको, माय लॉर्ड, अगर किसी पे जुल्म हो, असर रसूख वाला हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी में जैसे उनके साथ उनको बंद किया गया हो, किडनैप किया गया हो, उससे पार्टी तब्दील कराई हुई बाई फोर्स, उसकी एविडेंस आ जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि जनाब आज ही ऑर्डर फरमा दे, जो हमारा कमीशन वाली बात थी। शेख साहब वो फ्री है ना, किडनैपिंग आपके पॉइंट ऑफ व्यू से किडनैपिंग हो गई, वापस आ गए, अभी तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि हम किडनैप हुए थे या हमें बाय फोर्स ले जाके हमसे नहीं कहा। उसमें उस्मान डार ने बोला ये बात शेख रशीद ने बोली। कैपेसिटी में क्यों नहीं आते हैं? अब आपने देखे ना इसमें अपने पेज 3 पे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का भी नाम लिखा हुआ आपने, PMNN स्टार, आपके अपनी उसमें जो है स्टार कैंडिडेट ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जी वेंट मिसिंग। अब PMLN के हैं ये, अब आपके पास अथॉरिटी है कि इतने सारे नाम आपने लिखे हैं। मैं तो वो चीजें उनके नाम एफिडेविट्स हैं कि तो उनका टू दैट एक्सटेंट ग्रीवेंस के वो वापस आ गए, वो रिड्रेस हो गया। लेकिन जो कुछ उनके साथ हुआ उसके बारे में आप उसके गवाह हैं शायद साहब। सर पूरा पाकिस्तान गवाह है। नहीं ये देखिए ये डायलॉग इधर ना करें, ये बाहर जाके आप टॉक शोज पे कर लीजिए। नहीं प्लीज, अगर आप हमारा मजाक उड़ाएंगे उठा करके, नहीं हम आपको इजाजत नहीं देंगे। अगर आप इस मैटर को सीरियसली नहीं लेना चाहते हैं, जो हम बहुत सीरियसली लेना चाह रहे हैं इस मैटर को, और आप इसको अगर सियासी तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हम इजाजत नहीं देंगे आपको। ठीक है, ये बात कहना